Heart sounds 1. Atrial systole. The tricuspid and mitral valves are open and the filling of ventricles begins. It contributes to the 30% of ventricular filling. Second is the isovolumetric contraction. Here, the first heart sound is heard. It is because of the closure of the mitral and the tricuspid valves, and it is heard at the end of the atrial systole. During the isovolumetric contraction, no blood comes in and no blood goes out from the ventricle, and the ventricle contract and the pressure starts building up. Next is the ventricular systole. Here the opening of aortic and pulmonary valves during ventricle systole, which causes the ejection click, and equal amount of blood goes out of both the ventricles. Next is the isovolumetric relaxation. The aortic and pulmonary valves close at the end of the systole and generate the sound S2. All the valves are closed, heart relaxes, and the venous filling of atria starts during this phase. Next is the stage of rapid ventricular filling. Here is the free flow of blood direct into the ventricles, and 70% of the filling of ventricular occurs, and here the opening of mitral and tricuspid valves at the end causes opening snap. मतलब इसमें अपन ने ये पढ़ा है कि एट्रियल सिस्टोल में 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में S1 होता है एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, जो कि है बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व्स. फिर जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उसमें ओपनिंग ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स होती है और इजेक्शन क्लिक अपने को सुनाई देती है. फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में सेकेंड हार्ट साउंड अपने को सुनाई देता है, जो कि एट द एंड ऑफ द सिस्टोल है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स. और लास्ट स्टेज जो है स्टेज ऑफ रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग. इसमें 70% ऑफ द फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, एंड ओपनिंग ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स एट द एंड कॉजेज द ओपनिंग स्नैप. S1 एंड S2 को लब डब बोलते हैं, एंड सिस्टोल का ड्यूरेशन इज लेसर देन द डायस्टोल. Heart needs some time to get filled with blood. Systole is the period between S1 and S2. Ejection click comes just after S1, and the aortic valves close before the pulmonary valve. The time gap is 30 milliseconds. The short period between the end of systole and the closure of aortic valve is known as the protodiastole, and the period between aortic valve closure and opening snap is known as isovolumetric contraction, and the momentary period of least cardiac motion after rapid ventricular filling is known as diastasis. मतलब सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, उसके बाद में प्रोटोडायस्टोल हुआ, उसके बाद में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हुआ, फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई, एंड फिर डायस्टेसिस हुआ. नेक्स्ट कम्स द एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स S3 एंड S4. S4 को बोलते हैं एट्रियल गैलप रिदम. 4 में ए जैसा आता है तो उसको एट्रियल गैलप रिदम से याद करो. एंड 4 कम्स जस्ट बिफोर S1. ये लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन में दिखता है, एंड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, एंड ऑफ कोर्स इफ़ नॉट ट्रीटेड देन इट कैन cause left atrial hypertrophy also, and atria will generate the more power which creates turbulence and produces the S4 sound. S3 को बोलते हैं वेंट्रिकुलर गैलप रिदम, एंड इसको सुनते हैं अपन रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में, एंड इट इज़ नॉर्मल. मतलब इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल साउंड इन चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी एंड अडल्ट्स अप टू 35 years. The extra information: stethoscope. From the diaphragm side we can hear high pitch heart sounds, and from the bell we can hear low pitch heart sounds. Low pitch heart sounds are only for S3, S4, tumor plop sound, and the murmur of mitral stenosis. Atrial myxoma. There is a pedunculated tumor. मतलब एक ट्यूमर होता है स्टॉप के ऊपर, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है वहाँ पे ये होता है ट्यूमर, और ट्यूमर का स्टॉक होता है मतलब एक ब्रांच के जैसा, और ये लेफ्ट एट्रियम की वॉल पे लटका हुआ होता है. फिर जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो वो ट्यूमर को हिट करेगा, और ट्यूमर मिट्रल वॉल्व की लीफलेट को हिट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा जिसको बोलेंगे ट्यूमर प्लॉप साउंड. इसकी वजह से ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है वो कम हो जाएगा, एंड साउंड ओपनिंग स्नैप के बाद आएगा, क्योंकि ये तब इम्पैक्ट करता है जब मिट्रल वॉल्व ऑलरेडी ओपन हो, और ये एक लो पिच हार्ट साउंड है, तो इसलिए इसको अपन बेल से सुनते हैं. फिर एक क्लिनिकल सिनेरियो है कि एक यंग फीमेल प्रेजेंट्स विथ
क्लिनिकल फीचर्स लाइक एफर्ट इंटॉलरेंस, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, प्लेटिपनिया, मतलब कि बैठते वक्त वो ज़्यादा ब्रेथलेस फील करती है एंड जैसे ही वो लेट जाती है तो उसका ब्रेथलेसनेस नॉर्मल हो जाता है और उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होता है। लेकिन फिर जब अपन इसको मतलब देखते हैं तो डॉक्टर्स कैन कन्फ्यूज़ दिस विथ पैनिक अटैक्स। तो अब आगे एग्जामिनेशन देखते हैं। नो पार्लर, क्योंकि पहले अपने को ऐसा भी लग सकता है कि ऑफ कोर्स वुमेन है एंड शी इज़ फेंटिंग एंड ब्रेथलेसनेस, तो ये अनेमिया भी हो सकता है, बट पार्लर नहीं है तो फिर कैंसिल दिस। एंड ट्यूमर प्लॉप साउंड पॉजिटिव, एंड क्योंकि ये लो पिच साउंड है तो ये मिस हो सकता है एंड इसमें मिड और लेट डायस्टोलिक मर्मर इज़ हर्ड। फिर बाद में क्लिनिकल कोर्स, रिपीटेड इम्पैक्ट बाय ट्यूमर लीड्स टू द एंडोथीलियल डैमेज ऑफ द माइट्रल वॉल्व। अब वही ये वॉल्व पे बार बार कोई चीज़ टकराएगी तो फिर वो डैमेज हो जाएगा उसका एंडोथीलियम, एंड डैमेज है तो फिर ऑफकोर्स उसको साफ सही करने के लिए प्लेटलेट आएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लेग, एंड ट्यूमर सेल्स कैन गेट डिसलॉज्ड। और फिर बार बार इम्पैक्ट होगा तो फिर वो जो प्लेग बना है वो इधर उधर घूमेगा एंड उसकी वजह से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है एंड इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकता है और ट्रांसिएंट इस्चीमिक अटैक भी हो सकता है। अब मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी, क्योंकि अपने को उसमें ट्यूमर दिख जाएगा, एंड ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द ट्यूमर। नेक्स्ट इज द पैपिलरी इलास्टोमा। द ट्यूमर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिट्रल वॉल्व लीफलेट। जैसे वो पहले वाला वॉल्व के ऊपर आके टकरा रहा था, ये वॉल्व के अंदर ही है, मतलब वॉल्व से चिपका हुआ है। ये एम्बॉलिक मैनिफेस्टेशन, एम्बॉलिक मतलब ये अटका हुआ है, कैन कॉज TIA विच इज़ द ट्रांसिएंट इस्चीमिक अटैक हो सकता है। और प्लॉप साउंड नहीं होगा क्योंकि ऑफकोर्स ये लटका हुआ नहीं है एंड इसमें प्लेटिपनिया नहीं होगा। ट्रीटमेंट है डिप्लॉय प्रोस्थेटिक वॉल्व, वो वॉल्व चेंज करना है अपने को। एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एट्रियल मिक्सोमा, मतलब इट कैन बी कन्फ्यूज विद एट्रियल मिक्सोमा क्योंकि इसमें ट्यूमर प्लॉप साउंड और प्लेटिपनिया प्रेजेंट होता है। नहीं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस important information, most common tumor of the heart is secondary metastatic tumor, जो कि आया है ओट सेल लंग कार्सिनोमा से, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट या फिर मैलिग्नेंट मेलानोमा। एंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ हार्ट इज एंजियोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन ट्यूमर सेकेंडरी मेटास्टेटिक ट्यूमर जो मेटास्टेसाइज होके आया है फ्रॉम द लंग सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा। और सबसे कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है एंजियोसार्कोमा, जो विच इज़ rhabdomyosarcoma in the case of children, and the most common benign tumor of heart is the atrial myxoma. Next, tubercular pericarditis. It is a form of extrapulmonary tuberculosis. There is serofibrinous exudate outside the heart which causes inflammation and irritation of the phrenic nerve. Important information, most common form of extrapulmonary tuberculosis is cervical lymphadenopathy. Clinical features of tubercular pericarditis: chest pain at rest क्योंकि phrenic nerve is involved, pain radiating to the left shoulder, low grade fever, night sweats, and involuntary weight loss which is 5% or 10 pounds over the 6 months. Means the person eats but still there is weight loss. On examination we can see that there is a pericardial friction rub which means there are scratchy sounds heard on auscultation. Now it can be confused with pleural rub. So what is the difference between them? In pericardial friction rub, it is present even when the patient holds his breath, but pleural rub is heard in the phase of deep inspiration, and when the person is holding his breath, the sound it disappears. Then workup, in ECG we can see that there is ST elevation. Now about ST elevation, it can be seen in pericarditis also and myocardial infarction also. In pericarditis, the ST elevation has a concave upward shape. Concave मतलब अंदर जाता हुआ shape, and ये सारी लीड्स में अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एक्सेप्ट AVR, क्योंकि AVR में ऑफ कोर्स देयर आर रेसिप्रोकल चेंजेस, जो कि R से अपन लोग याद कर सकते हैं, R फॉर रेसिप्रोकल चेंजेस. एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ST एलिवेशन विल बी कॉन्वेक्स शेप इन एन अपवर्ड डायरेक्शन विद अ T वेव इन्वर्जन. मतलब ST एलिवेशन का कॉन्वेक्स शेप भी है एंड साथ में T वेव इन्वर्जन भी है.
Investigation of choice is CBNAT or gene expert testing of the pericardial fluid, which can be obtained via echo-guided pericardiocentesis, which is the fluid. Treatment is anti-tubercular therapy for 6 months. Then next we are talking about constrictive pericarditis. There is development of calcification around the heart of the patient after treatment with ATT. Means the person has been treated with the tuberculosis drugs, and because of that their complication has arisen, which is the development of the calcification, and the amount of blood entering the ventricles is less due to non-compliance. The blood entering bounces off the valves and creates turbulence, because of course now it is not stretching, it is calcified, so there is turbulence, and this produces other cardiac auscultatory finding known as pericardial shudder. Pericardial shudder is also known as pericardial shock or pericardial knock. It is a loud sound, and it is a diastolic phenomena because it occurs during the ventricular filling, as we know that it hits the ventricles and then it bounces, this turbulence. So this is heard during the ventricular filling, and it is heard after the opening snap and can mimic the third heart sound. Some important points from this lecture. S4 is also known as the pre-systolic heart sound because it is heard before S1. Then mid-systolic click is seen in mitral valve prolapse. Tumor plop sound is seen in atrial myxoma. Pericardial shudder is heard in constrictive pericarditis. Ejection click is normally not audible on auscultation, and loud ejection click is seen in valvular aortic stenosis. Thank you.